सो कोई डाउट है लास्ट क्लास से? सो उसको फटाफट हम लोग ने जो मैंने होमवर्क दिया था मैं उसे पूरा करूंगा, है ना? सो ताकि आप लोग चेक कर पाओ कि आपका सही है या नहीं है। ठीक है। सो बहुत सारे लोगों ने भेजा है सॉल्यूशन, बट अनफॉर्चुनेटली थोड़ा बिजी होने के कारण मैं चेक नहीं कर पाया हूँ। आई विल चेक इट, but before that I will give you solution. Okay, so very good, lot of people have done excellent job. I have just seized superficially, so let's try to go for it. So अभी तक कल वाले ग्राफ में कोई प्रॉब्लम है तो पहले उसको पूछ लीजिए, बिकॉज आई विल प्लॉट इट इन अ वेरी फास्ट मोड। ठीक है, सर एवरीवन इज जैसा कंफर्टेबल? सर बोलो। सर जैसे कल हमने ग्राफ प्लॉट किया था उसमें बस एक ही अनस्टेबल पॉइंट था। यस, हाँ, तो अगर हमारे पास ज्यादा अनस्टेबल पॉइंट्स हुए तो फिर सेपरेटिक्स हर अलग अलग अनस्टेबल। हो जाएगा, उसके लिए भी होगा दूसरे। देखो, सेपरेटिक्स को अनस्टेबल पॉइंट से मत देखो, ठीक है? जी सेपरेटिक्स को आप कुछ ये देखो कि नई फैमिली ऑफ कर्व शुरू हो रही है या नहीं। और गेटिंग माय पॉइंट? यस है ना? तो नई फैमिली ऑफ कर्व एक पर्टिकुलर एनर्जी के बाद ही तो शुरू होगी ना। कुछ ना कुछ थ्रेशोल्ड एनर्जी तो होगा ही होगा। ठीक है यस। ठीक है सर। और इन जनरल ये देखा गया है कि दैट इज फॉर द अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट। और यस, इफ यू हैव टू अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट देन यू हैव टू टेक केयर बोथ ऑफ देम। क्लियर है ये? ओके सर। ओके, सो लेट्स ट्राई टू गो फॉर सम बेसिक कर्व। दो कर्व या तीन कर्व मैं प्लॉट करूंगा। सो दिस इज जस्ट अ डाउट सेशन, यू कैन एज्यूम। So this will be x square by 2 minus x cube by 3. So obviously we have done lot of exercise on this particular potential, है ना? इस पर तो हमने कई एक्सरसाइज कर रखे हैं। एंड दिस इज समथिंग लाइक दिस पोटेंशियल इज समथिंग लाइक दिस। आर पीपल कंफर्टेबल? Yes, sir. Yes, vx versus x. So this is our potential, and what we are going to do, we are just trying to plot px versus x. Now we have to start from the negative energy. This value is what? 1 by 6. Everyone is comfortable with this potential? है ना? So this is 1 by 6. So first of all, if I am taking negative energy, this is allowed or forbidden region? बोलिए, allowed or forbidden? फॉरवर्ड। कोई बोल नहीं रहा है। Anybody can give me answer? Forbidden. Forbidden region. Very good. So this is forbidden region. This one is Forbidden. 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 This one is turning point. Yes, this is your turning Allowed. point. So this is turning point. This is your allowed region. So you have to plot your phase plot only into this region. So you will start from here. If you will go away from this point, so away from turning point, the potential energy is continuously decreasing, isn't it? और कम हो रहा है, और कम हो रहा है, और कम हो रहा है. It is continuously decreasing. So kinetic energy will continuously increase. So momentum will also continuously increase. And we have sign convention. And this is my sign convention. This one is positive. And this one is what? Negative sign convention. So yes, this curve is something like this. Yes. Now you can approach this point also. आप approach भी कर सकते हो इसके लिए. Yes या no? If you are approaching with the same energy and that is negative energy, what you will find? You will find potential energy is continuously increasing. You are feeling that you are crawling on the hill. आप hill के ऊपर चल रहे हो, है ना? So you are just going into this direction. You are moving up to the hill. So you have this sort of feeling. So as you are moving towards this point, the potential energies appear to increase. So kinetic energy will appear to decrease. And so why momentum will also decrease. But obviously in a negative direction, because my sign convention are telling that this is negative one. So yes, this can be there. What will happen? Your particle will come here, collide it, go back. So it can be something like this. Come here, collide it, go back. And you can have the trend of momentum is something like this. Everyone is comfortable for this one? Yes. ठीक है? Okay, good. Next, I am taking this one.
So this is energy, and this is for energy E is less than 0. And let's go for energy between 0 to 1 by 6. So if I am talking about 0 to 1 by 6, this one is allowed or forbidden? Anyone? धीरज बताओ, allowed है या फिर forbidden है? If you are there. Allowed. मैं धीरज से पूछ रहा हूं. धीरज, अथीरा, allowed or forbidden? It's forbidden, sir. Okay, that is forbidden. This one is allowed or That- forbidden? Allowed, Allowed, sir. sir. Allowed. This one is Forbidden. forbidden. This one is allowed. Allowed. Okay. So here is my particle is bounded between these two turning point. Are you agreed with this or not? Yes, Into sir. reason 2, my particle is bounded. Yes or no? Yes, sir. Yes. So if it is bounded and this is what a stable equilibrium point. So in this region, can I have this sort of curve? Yes, sir. Yes. Everyone is comfortable? Yes. Yes, sir. And for this region, you have exactly same trend, isn't it? Exactly same trend. Now just tell me whether I am correct or false. If my energy is between 0 to 1 by 6, I have bounded phase curve as well as unbounded phase curve. It is correct or false? True or false? True. True, sir. True. This is true. If my energy is between 0 to 1 by 6, there is oscillatory motion in one region. True or false? True. True. इस region में हमें क्या मिलेगा? Oscillatory, because bounded motion about a stable equilibrium point. So this is known as what? Oscillatory motion. Everyone is comfortable? Yes, sir. Yes, great. Now we will plot separatics for energy E is equal to 1 by 6. Yes or no? Yes, sir. Yes. E is equal to 1 by, तो separatics हम सबसे last में plot करेंगे. We will go for E is greater than 1 by 6. Now this region is allowed or forbidden? Forbidden. चंचूर के अलावा और कोई? Allowed or forbidden? Forbidden. Forbidden. This one is allowed or forbidden? Allowed. Allowed. This one is allowed. This one is Allowed. allowed. All region are allowed. Now, this is my turning point. So at this point, my momentum is 0. Now, you have two transition point, isn't it? Why I am saying a transition point? Because the nature of potential is just going to change. Potential का nature क्या हो रहा है? It is just going to change. So what will happen at this point? Your potential energy is decreasing, and after then your potential energy is going to increase, and after then again your potential energy is going to decrease. So obviously you have exactly contrast trend of your kinetic energy. Now your potential energy is going to decrease from in this region. So your kinetic energy is going to increase. So why your momentum is going to increase up to this region. After then your potential energy is going to increase. So kinetic energy is going to decrease. So yes, kinetic energy is going to decrease, but it will never be 0. Why? Because there is difference. This difference is nothing but kinetic energy. Are you people comfortable? Yes, sir. Yes, sir. So here you have minima. Here you have at this is unstable point, you have minima, and after then what is going to happen? Your potential is sharply going to decrease. So your kinetic energy is sharply going to increase. So this is your trend when you are moving from this side. Obviously, you can approach in this side. You have exactly same trend, isn't it? You have exactly same trend in this figure also. Now, this is your curve. Now we have to go for separatics, and that separatics is for energy 1 by 6. So for energy 1 by 6, we can start from here, we can go here and again come back. So मैं इसको dotted के through दिखा रहा हूं, okay? So something like this. This is from here to here. Very repulsive point. You can go back. You can go back. You can start from here,
go into this direction. Yes. Or you can come into from here. So something like this. Okay. As you will come at this point, you will feel lot of repulsion. You will go into this direction. Okay. And now the beautiful part is that if we will see the sign of arrow into each and every quadrant, that is exactly same. देख पा रहे हो? Yes, sir. Okay. And now this is basically, this dotted line is nothing but for energy E is equal to 1/6. And this is all about separatics. Everyone is comfortable? सर वो सेपरेटिक्स का एक और बार बता दो एक और बात बताते हैं. चलो, अब तुम, नाम क्या है तुम्हारा? व्हाट्स योर नेम? अंजू सर. अंजू. वेरी गुड अंजू. चलिए अंजू, शुरू करते हैं यहाँ से यहाँ पर आ सकते हो? यस या नो? बोलो हाँ या ना. यस सर. आप Yes, चिंता sir. मत करो. आप चिंता, आप अपना, आप जैसे क्लास में रहते हो वैसे रहो. यू कैन गो फ्रॉम हियर टू हियर. यस या नो? यस सर. यस. sir. आफ्टर देन यहाँ पर आओगे तो रिपल्सन मिलेगा. रिपल्सन मिलने yes, के sir. मतलब क्या है कि वहां से दूर जाओगे, फिर से वापस जाओगे. यस या नो? यस. यस. सो यू विल कम बैक. सो यहां से यहां आ गया. You can come near to near about this point, but you will never land at this point because this is highly repulsive point. And after then, you will just go into this direction. So this is coming here and going back. Are you comfortable? यस सर. Okay. Now you can come from this direction. You can come from this direction. So if you are coming from this direction, you can come in this direction. And as is well, you will reach at here. What will happen to you? Again, you will feel lot of repulsion. You will feel lot of anxiety, lot of repulsion, lot of instability, isn't it? So when you will feel lot of instability, then what will happen? You will just try to go back, isn't it? यस. होगा, है ना? आप आ रहे हो, यहाँ तक पहुंचने की कोशिश करोगे, but no, you will again go back and you can just go for this. So all possibilities are here. Either you will into this region or you will into this region. Anything can be happen. You can come near to near about this point, but you will never land at this particular point. Are people comfortable? Yes, sir. Okay. हेलो सर. हाँ. सर मेरा इतना कंफ्यूजन हो जाता है हमेशा. हम जब मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में दिखाते ना, अभी आपने जो एरो ड्रॉ किया था फर्स्ट साइड का, वो सर नहीं समझ में आता. मतलब एरो अपवर्ड अरे जाना देखो चाहिए. तो, ये देखो, ये लेफ्ट से राइट जा रहे हो या राइट से लेफ्ट जा रहे हो? वो समझ में आता है. फिर क्या दिखाई देता लेकिन है? यहाँ हम जो नीचे ना, मतलब अभी ये जो first बना रहे हैं, हमने ये जो नहीं draw समझ में आ रहा है? हाँ, ये आप नहीं, लेफ्ट इसके से राइट बगल जा रहे हो वाला. या राइट से लेफ्ट जा रहे हो? पोटेंशियल को अप्रोच कर रहे हो या फिर पोटेंशियल से दूर जा रहे हो? अप्रोच कर रहे हो. अप्रोच कर रहे हो. सो अप्रोच ऐसा ही तो करोगे इस रीजन में. यस? नहीं सर, वो वाला नहीं. तो कौन सा? पहला हमने जो ड्रॉ किया था ना, ये वाला, इसके लिए? हाँ, उसमें नीचे. ये वाला. हाँ, ये सर इसमें चलो मेरा ठीक है. एरो गलत हो जाता है. ये वाला जो है, आप अप्रोच कर रहे हो? यस या नो? यस सर. आप अप्रोच करो, क्या फील करोगे? हिल के ऊपर चढ़ना फील कर रहे हो या फिर नीचे जाना है? इंक्रीज हो रहा है. हिल के ऊपर चढ़ना फील कर रहे हो ना? तो मोमेंटम डिक्रीज होगा या फिर इंक्रीज करेगा? पोटेंशियल बढ़ रहा है, मोमेंटम डिक्रीज होगा. डिक्रीज करेगा. अब आप इधर से इधर जा रहे हो तो मोमेंटम किस डायरेक्शन में डिक्रीज करेगा? नेगेटिव के डायरेक्शन में. दिस इज डायरेक्शन, बट मैग्नीट्यूड तो कम होता जा रहा है ना. दिस इज योर मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हाँ, वही कंफ्यूजन हो जाता है. ये मैग्नीट्यूड है, हाँ. लेकिन डायरेक्शन ये है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दिस इज योर डायरेक्शन. ये डायरेक्शन कब आ रहा है? जब आप इधर से इधर जा रहे हो. तो आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके. मैग्नीट्यूड कंसीडर करना होगा. मैग्नीट्यूड, भाई मैग्नीट्यूड कम हो रहा है ना. So why I am always saying kinetic energy is decreasing. Are you getting my point? So if I am saying kinetic energy is decreasing, that means I am saying magnitude is decreasing actually. And why I am choosing this quadrant? Because my momentum is negative. Yes? So you are approaching. So why you are just going to this? You approach, after then you will come back. So after then what will happen? You are going away from this point, na?
Yes. तो अवे जब हो रहा है तो कौन सा, ये वाला मोमेंटम आ जाएगा, ये डायरेक्शन आ जाएगा, और आप देखो Positive इसका मैग्नीट्यूड direction. बढ़ रहा है या Yes, नहीं. हाँ. Every point you can see the magnitude is increasing, isn't it? Yes, sir. आप देखो तो एरो के साथ देखो, जैसे एरो है वैसे आप मूव कर रहे हो. सो जैसे जैसे दूर जा रहे हो मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है या फिर घट रहा है, बताओ. Magnitude बढ़ रहा है. बढ़ इधर रहा है. देखो, अब इसके नजदीक आओ, जैसे जैसे आप नजदीक जा रहे हो वैसे वैसे मैग्नीट्यूड घट रहा है या बढ़ रहा है, कम हो रहा है. कम हो रहा है. तो दिखाई तो दे रहा है, साफ साफ तो है. और एरो क्या बता रहा है, आप दूर जा रहे हो या उसकी तरफ जा रहे हो. यस, Okay, sir. ठीक है. ओके, चलो. सो आई होप लॉट ऑफ पीपल हैव डन दिस थिंग करेक्टली. क्लियर है ना ये आप लोगों के लिए? Yes, sir. ओके, चलो. So let us go for Vx is equal to x square by 2 minus x4 by 4. So I hope you all people have drawn this potential. Draw किया हो ना? This is something like this, isn't it? मैं अभी potential कैसे draw कर रहा हूं उसमें नहीं जा रहा हूं. Okay? So I assume that you people draw this potential. सही लिखा हूं या गलत है ये? This value is 1 by 4. Yes या no? Huh? Yes, sir. Yes. So this value is 1 by 4. Now let's go for your px versus x. Negative energy. Allowed or forbidden? Fatafat. Allowed or forbidden? This region? Forbidden. Allowed. Allowed. Look at Allowed, this. sir. This is allowed. This one is Forbidden. forbidden. This one is Forbidden. this one is Allowed. okay. So here you have turning point. You will start from here. So the potential energy is decreasing. So kinetic energy is increasing. Again, my sign convention, this is positive. This is negative. So what will happen? Continuously magnitude will increase, but in this direction, isn't it? You can just approach this thing, then you can approach something like this. Clear है ये? In this side, sir. you have exactly same thing. Away. So you are moving in this direction. So continuously your magnitude is increasing. Approaching, this one is you are going to approach. So this is E is less than 0. This is also E is less than 0. Now E is between 0 to 1 by 4. So this region is allowed or forbidden? Anyone? Allowed or forbidden? Allowed. मजा नहीं आ रहा है. Allowed or forbidden? Allowed. Allowed. This one is Allowed. forbidden. Forbidden. This one is Forbidden. allowed. This one is Allowed. forbidden. This one is Allowed. allowed. यहाँ पर bounded. So this is your bounded. ठीक है? Okay. This is your bounded in this region. In this region, you have exactly same trend. अब फटाफट बनाना होगा आपको, एग्जाम में तो इतना समय थोड़ी दोगे. Exactly same trend into this region. In this region, you have exactly same trend. Yes. If your energy is greater than 1 by 4, for 1 by 4, you have separatics. So this is for unstable equilibrium point. This is minus 1, and this is plus 1. This is unstable equilibrium point. Now, for 1 by 4, all region are allowed or all region are forbidden? All region are allowed. All region are allowed. So what will happen? You will come here. So there are three transition point. Here you have maximum potential, then you will have minimum kinetic energy. Here you have minimum kinetic energy, so you have maximum potential. Again at here you have maximum
potential energy, so you have minimum kinetic energy. So but you have something like this. ठीक है ना? मेरा थोड़ा ड्राइंग गड़बड़ है, आप ड्राइंग बेटर करोगे, ठीक है? देखो यहां पर कोई दिक्कत हो रहा है आपको इस कर्व में? यस या नो? No, sir. Okay. And again you can come from in this direction. You have exactly same sort of curve. But you have something like this. आप बेसिकली ये देखोगे जो भी ट्रेंड इसका है ये बिल्कुल ही अपोजिट ट्रेंड मिलेगा आपको यहां पर, isn't it? आप देख रहे हो दिस इज एम शेप, देन यू हैव समथिंग लाइक डब्ल्यू शेप, isn't it? हो रहा है क्या? देखो तो, अगर पोटेंशियल एनर्जी का शेप एम साइड है तो इसका शेप डब्ल्यू के जैसा बन रहा है। सर ये नीचे Yes, जो sir. एम साइज बना एनर्जी में सर, हाँ? सर वो वाला नहीं समझ में आया सर, जो नीचे जो ये एम वाला? साइज में बना सर ये, हाँ सर। नहीं नहीं, आप भाई आप कॉन्ट्रास्ट में देखोगे ना, जैसा ये ट्रेंड रहेगा वैसा ही तो ये भी ट्रेंड रहेगा, वो सर समझ गए सर। है ना? सो मींस देख लो सेंटर पे पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है या कम है? बताओ। कम कम है तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा रहेगा या कम रहेगा? ज्यादा। ज्यादा। ज्यादा है, isn't it? यस यहां पर ज्यादा है या कम है? ज्यादा। ज्यादा है तो कम है, यस? सो यू कैन, यहां पर मैग्नीट्यूड ऐसे देख रहे हो ना, सो यू कैन हैव दिस थिंग। नाउ फॉर E is equal to 1/4 you have separatics, so you can start, you will just land into this region, isn't it? So you can land into this region. Okay, you can go from here to here, you can go from here to here, something like this. Okay, you can go from here to here, go from here to here, you can come from here to here, come from here to here, you can come from here to here, you can come from here, all possible motion, जो possible motion है उन सबको देखना। You can come from here to here, you can come from here to here, that's it. ये आपके एग्जाम में आ चुका है, नेट के एग्जाम में आ चुका है। तो ऐसे प्रॉब्लम आएंगे तो कर तो लोगे ना? Yes, sir. Yes, sir. है ना? So this was the toughest one, अभी तक का जो सबसे toughest था ये आया था। Okay? Sir, I have one doubt. हाँ जब हम बताओ। एनर्जी लेवल लेते हैं ना, तो हम लोग बोलो जो बोलो, अपने सॉरी सर सॉरी। जो हम जब एनर्जी लेवल लेते हैं ना सर, नेगेटिव बोलिए। पॉजिटिव एंड इक्वल, तो हाँ जो नीचे है वो नेगेटिव है और जो हमारे ग्राफ के पीक से ऊपर है मींस पॉजिटिव। हाँ जो आप ये इक्वल टू 1/4 जब ले रहे हैं, तो हाँ, उससे नीचे जो लेते हैं उसका आप क्या कंसीडर करते हैं? इक्वल टू 0? ये 0 हो गया, सर उससे ऊपर जो आपने लिया है, ये 1/4 है, नहीं सर उससे नीचे जो बीच पे है। ये वाला है, जी आप जी ले लो 1/6 ले लो, ओके ठीक है? सर, वो हमारा एग्जम्पशन होता है ना। और बिल्कुल एक स्केलिंग के टाइप से देख लो, ऑब्वियसली ये 1/4 है तो ये तो 1/6 ही होगा, 1/8 होगा, कुछ वैसा ही तो नंबर रहेगा, है ना? आई थॉट दैट वी आर टेकिंग इट, मतलब जैसे हम, मेरे को ये लगा था, मेरा कंफ्यूजन था कि हम हाँ। फिक्स पॉइंट ले रहे हैं। नहीं नहीं, कोई फिक्स नहीं है, आप जनरल कर रहे हो ना, यू आर जस्ट, इसके बीच में तो इन्फिनाइट नंबर ऑफ एनर्जी हो सकती है 0 to 1/4 के बीच में, नहीं ओके कोई भी एक एनर्जी ले लो। यस यस ओके, ठीक है, चलो। सो आई थिंक इट्स ओवर टू यू, ठीक है? चलो नेक्स्ट वन एक और करते हैं, लास्ट। Then tomorrow we will go for a action angle variable, and that will be mainly for JEST and TIFR and NET examination. That is not for JAM exam. Okay? So कल की क्लास JAM के एस्पिरेंट अगर चाहो JEST TIFR के लिए तो ही करोगे, ठीक है? बट यू कैन डू, बहुत मजेदार है, बहुत आराम से कर सकते हो, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है ना? ओके, सो दिस इज अगेन वन ऑफ द वंडरफुल प्रॉब्लम। मैं कब से इसका वेट कर रहा हूं एग्जाम में आने का, बट आ नहीं रहा है, आना चाहिए। x4/4 - x² by 2,
व्हाट इज योर पोटेंशियल? याद है पोटेंशियल क्या था? लास्ट का उल्टा। लास्ट का उल्टा, वेरी गुड, ऐसा था, है ना? सो दिस विल बी -1/4। याद है? ये सब करवा चुका हूं मैं, Yes, sir. है ना? तो ये मत बोलना कि सर जल्दी जल्दी कर दे रहा है। सो दिस इज योर Vx, दिस इज योर x। ओके, नाउ कैन यू टेक दिस मच ऑफ एनर्जी? यस या नो? कैन यू टेक दिस मच ऑफ एनर्जी? एनर्जी ये ले सकते हो -1 यूनिट। सर नहीं सर, पोटेंशियल ज्यादा है। थप्पड़ लगेगी तेज। दिस, ये एनर्जी ले सकते हो क्या? ले सकते हैं, लेकिन ऐसे ऑल रीजन आर फॉरबिडन रीजन। ले सकते हैं, इनसे कुछ भी नहीं ले सकते ना, जब फॉरबिडन है तो फिर कहां से ले सकते हो? उस एनर्जी का कोई मतलब नहीं है। दैट इज नॉट पॉसिबल। यू कैन नॉट गिव योर पार्टिकल दिस मच ऑफ एनर्जी बिकॉज यू आर डूइंग क्लासिकल मैकेनिक्स, इजंट इट? आपको बात समझ में आ रही है मैं जो कह रहा हूं? Yes, sir. है ना? Yes, तो sir. दिस एनर्जी है तो पॉसिबल ही नहीं है पार्टिकल के लिए। सो मिनिमम एनर्जी आपको लेना पड़ेगा -1/4। सो आप यहां पर लैंड कर जाओगे। So this will be this point. This point. Now, energy between 0 to 1/4. This is allowed or forbidden? Forbidden. Forbidden. This one is? Allowed. This one is? Forbidden. This one is? Allowed. Bounded or unbounded? Bounded. Bounded, unbounded? Bounded. Very good. तो एग्जाम में तो इतना ही फास्ट बनाएंगे ना क्या? Yes. Yes. Sign simple. चलो. This energy allowed, forbidden? Forbidden. Forbidden. Allowed, forbidden? Allowed. Allowed, forbidden? Allowed. Allowed, forbidden? Forbidden. Bounded, unbounded? Bounded. Bounded. So you will start from here. Something like this. बाउंडेड है लेकिन ये ऑसिलेटेड है। Yes, this is not oscillatory. Which one is oscillatory? First or second? फर्स्ट वन। First one is oscillatory. This is about unstable equilibrium point. Yes? Yes, sir. Okay. Now, और ऊपर जाओगे, you will do something, but ये गैप थोड़ा कम होता जाएगा, है ना? इसका रिलेवेंस थोड़ा कम होता जाएगा. You will have something like this. Separatrix किस एनर्जी के लिए होगा? 1/4 Zero के लिए. Separatrix will be for zero energy. Okay? So you will start from here, go into this region. Again, you can come back. Again, you will start from here. Again, you can go something like this. So this is your, so you can see there is always bounded motion, but all bounded motion are not oscillatory in nature. Okay? So एक होमवर्क दे दूं? Yes, sir. इसको मैं चेक करूंगा, सारे का चेक करूंगा. मैं जस्ट पोटेंशियल प्लॉट कर रहा हूं. ओके? This potential is something like this. Okay? कैसा पोटेंशियल है? दिखाई दे रहा है? Yes, sir. है ना? So this is your potential. You have to just go for px versus x. ये देख रहे हो नीचे आया हुआ है, इससे ज्यादा नीचे है. ओके? एंड कोई नंबर वगैरह नहीं दिया, एक्स कुछ नहीं दिया, आपको जस्ट प्लॉट करना है कैसा होगा बाय दिस ऑल दिस assumption. क्लियर है ये? So this is your homework. Just do it. Chalo. So I think I have finished this thing. So tomorrow I will just go for action angle variable. उसे हम लोग पूरा करेंगे. Very nice problem. बहुत ही interesting है कि how you can get the periodicity of any bounded motion. कोई भी bounded motion है तो उसकी periodicity कैसे निकाल सकते हैं? Obviously अगर हार्मोनिक ऑसिलेटर है तो उसके लिए फ्रीक्वेंसी क्या आएगा? कांस्टेंट या वेरिएबल? कांस्टेंट. और अगर वो हार्मोनिक ऑसिलेटर नहीं है, दैट इज नॉन लीनियर है, देन व्हाट विल बी दैट? दैट विल फंक्शन ऑफ व्हाट? एनर्जी.
एज वेल एज एम्पलीट्यूड। अगर एनर्जी का फंक्शन है तो एम्पलीट्यूड का भी फंक्शन होगा। Yes, sir. यस, वी विल सी इट इन नेक्स्ट क्लास। सो टुमारो हम लोग एक सेगमेंट फिनिश करेंगे, ठीक है? ओके, थैंक यू, Thank you, sir. थैंक यू। Thank you.